3 महीना से दर्द है। तो क्या क्या करने से दर्द होता है? कुछ ना, अपने आप दर्द होता है। बैठे से होता है, चले से, लेट के आराम आ जाते हैं? हाँ, लेट के आराम आ जाता है। अच्छा अच्छा, चलो लेट जाओ। कोई गिरी नहीं थी, चोट नहीं लगी थी? अच्छा। So this patient is suffering from the osteoporotic vertebral collapse of L2 and L3 vertebra without any history of fall. Usually these patients are having history of trivial fall की, लेकिन इनकी नहीं है। तो यहाँ MRI पे हम लोग देख सकते हैं that these two vertebrae L2 and L3 they are collapsed. Here also on the fat suppressed images that bone marrow edema is present, so these fractures are active. So this patient is suffering since last 3 months. So we are going to do the percutaneous MIPC, minimally invasive pain and spine intervention, known as percutaneous balloon kyphoplasty of this patient. So this fracture has happened because of the osteoporosis, which is a very common disease in the older age females after the menopause. So we are going to take care of the osteoporosis as well with a specialized treatment, focused treatment. So we are doing this case at Pain Medicine MIPC lab of Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences in the Pain Medicine unit of Department of Anesthesiology. Thank you very much. We will look after you after the procedure. Thank you. आराम से। चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? दर्द में आराम लग रहा है? हैं? हाँ, चल के देखो। चलो आराम आराम से। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, वापस बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से। देखो माँ, आपको ना करवट से ही लेटना है और करवट से ही बैठना है, क्योंकि आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं। तो उसके लिए हम दवाई देंगे। अभी हमने 2 हड्डियां फिक्स करी हैं आपकी बगैर ऑपरेशन के, है ना? तो उसमें सीमेंट भरा है, लेकिन और दवाइयां देंगे जिससे हड्डियों में ताकत आए। ठीक है, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है और खूब टहलना है, बस गिरना नहीं है, ये ध्यान रखना है। So this is after 1 hour of the percutaneous balloon compression, balloon kyphoplasty for the osteoporotic compression fractures of this lady. We are going to start the anti-osteoporotic treatment as well. She was having severe pain on sitting and the walking, as per her statement you saw in the earlier video. माँ, आपका ये वीडियो हम और लोगों को दिखाने के, जानकारी बढ़ाने के लिए फेसबुक वगैरह पर, यूट्यूब पे डालने, कोई एतराज तो नहीं है आपको? ठीक। So we have done it the percutaneous manner. तो हमारी रिक्वेस्ट ये है एज अ पेन फिजिशियन आपसे कि सारे अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें। महिलाओं को खास तौर से बहुत खतरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, जिसका आम तौर पे पता तभी चलता है जब उनको कोई फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर या तो रीढ़ की हड्डी का हो जाता है, या कूल्हे के हड्डी का हो जाता है, या कलाई का। ये 3 मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होते हैं। तो ऐसे कोई भी घर में अगर दादी, नानी, कोई भी माँ है तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इनको आगे भी कुछ दवाइयाँ चलेंगी जिससे इनको दोबारा तकलीफ ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 1 महीना से अच्छा, गिरी थी दोबारा से क्या? कुर्सी पर से गिर गई थी। तो शी इज अनदर पेशेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर। शी हैज ऑलरेडी अंडरगॉन वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर and was done percutaneous kyphoplasty at some other place for her fracture of L4 vertebra. So here you can see, unfortunately she was not given proper anti-osteoporotic treatment, because of which she was again having a little fall as per her statement, and now she is having not a frank fracture. If you can see here, it's a small upper end plate fracture. And here on the stir images or fat suppressed images, there is a very much edema in the this. So this shows the acute impending or fracture of upper end plate, which is causing her severe pain, which makes her unable to sit, unable to walk, and she is bedbound since last 1 month. So today at Pain Medicine MIPC lab of Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow,
we are going to fix her this new fracture as well with the percutaneous balloon kyphoplasty, which is a MIPSI, that is minimally invasive pain and spine intervention. Where we under local anesthesia we do the minimally invasive and percutaneous interventions for different kind of chronic pain, including the spine pain. So let's see how it goes, and this time we are going to make sure that she gets the proper aggressive anti-osteoporotic treatment. Please remember, if the patient has suffered a single osteoporotic or fragility fracture, she or he are having 20 to 30% chance of having another fracture in another year only if you do not provide them anti-osteoporotic treatment. So please meet a pain physician, visit a pain medicine OPD for any kind of chronic pain condition, including the spine and joint pain. We pain physicians are aspiring to help you with our intervention. Thank you very much. She has also undergone the percutaneous balloon kyphoplasty today at the pain medicine MIPSI lab of Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow. She is also suffering from the osteoporotic vertebral compression fracture of L1 vertebra. Before, in the previous video, you must have seen that she was unable to sit. Now let's see after half an hour of kyphoplasty what is her condition. माँ, करवट लेके पहले आगे आओ, पैर नीचे लटकाओ और फिर उठ कर बैठो. आराम से पैर नीचे करके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बैठो आराम से. बैठो आराम से, बहुत बढ़िया. कोई दिक्कत? दर्द में आराम है? हाँ, अब आराम ही रहेगा. So she was unable to sit. She was unable to walk since last 1 month. Unfortunately, as I told you earlier, she had an earlier fracture of L4 vertebra for which she was fixed with the kyphoplasty at some place else. But unfortunately, she did not get the proper anti-osteoporotic treatment. So we are going to start that treatment aggressively because we do not want her to have another fracture. माँ खड़ी हो जाइए. चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे ना? ठीक. तो शी इज वॉकिंग आफ्टर 1 month ऑफ द बेड रिडन. आराम से. ठीक, बहुत बढ़िया. कपड़े ठीक करो. हाँ. हाँ, पहले से बताओ ना, पहले के मुकाबले. चलो, वो जो कमर का दर्द पुराना है वो तो रहेगा माँ, लेकिन ये जो जिसकी वजह से उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, वो ठीक है ना? ठीक, बहुत बढ़िया. आ जाओ, वापस आ जाओ. और ऐसे देखो, आपको भी पहले बैठना है, फिर करवट से ही लेटना है. ये हमेशा ध्यान रखना है. हम दवाइयां चलाएंगे, उसके बाद भी आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है चीजें. So, in the chronic pain, especially chronic spine pain, there are multiple reasons for the back pain. So we have treated only one cause of her pain currently, after which she is sitting comfortably, pain-free, walking also, standing also, as you saw. But we may need to do something more for her chronic back pain, which is chronically there. That can be due to facet arthropathy, that can be due to lumbar canal stenosis. So please don't believe that single size fits all. No, but we need to take care of that. We will take care of that thing. So any kind of chronic pain of any body organ, especially spine, joint, nerves, trigeminal neuralgia, please seek a help of a pain physician near you. Or you can come to Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow at Pain Medicine OPD. So we are really blessed to get a chance to help these lovely ladies. Thank you very much.